billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान रहने वाला है। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पढ़िए अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया, जिसने इंसान को जमे व खून से पैदा किया। पढ़िए, और आपका रब करीम बहुत बड़ा है, जिसने कलम के जरिए इल्म सिखाया। उसी ने इंसान को वो सिखाया जो वो ना जानता था। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। Jazakallah. Today we are starting our PMA webinar, our 158th. Very important topic, and I'm very happy. My youngest colleague and now is the professor of anatomy. I am so happy that now today I am as a student listening his talk. Very, very important topic, and basic sciences I always love that these topics are very important: physiology, anatomy, biochemistry, pathology, forensic. These all basic sciences play a very, very important role in the basic medical education of the MD or MBBS. No doubt, unfortunately, we all are background singer. Nobody gave us importance when they become a clinicians or surgeon or something else. But as a duty of our basics teacher, we will continue our duty for as so long as we are here. And this webinar is in collaboration of Women Medical College. Very kind Professor Salma Kundi, you are always with me since 2020 when we started this program, and now we are conducting 158th webinar. South Asian Association of Physiology, Pakistan Physiology Society, Pakistan Association of Pathologists, and Medical Women Association of Pakistan. Before starting today's session, an incident happened in Quetta that acid was thrown on our young lady who was performing the duty. So at different platforms, it is our duty to raise the voice for the protection and the security of our doctors. And also we should raise the voice to the government that there should be very implementation of the law so that nobody can encourage to enter in the hospital and to harm all these doctors who are performing their duty. तो मैं आप सबसे भी ये गुजारिश करूंगा कि आप मुझसे इत्तेफाक करें कि हम उस डॉक्टर साहब की हमदर्दी में इस अलमिया के खिलाफ हम भी मुख्तलिफ सोसाइटियों के साथ हम इसमें भी उसको कंडम करते हैं. तो ओवर टू यू प्रोफेसर आशिक हुसैन. Thank you very much, sir. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. My name is Dr. Ashiq Hussain, and I am professor of anatomy. ग्रेजुएशन के लिए आपकी सारा इंट्रोडक्शन कर दें. जी, I'm professor of anatomy at Women Medical College, Ahmedabad. I am interested in AI as different platforms. As you know that with the passage of the time, these ग्रेजुएशन कहाँ से की थी वो पूरा इंट्रोडक्शन. जी सर, I graduated from Frontier Medical College in 2004 and then did my MBBS, and then I became a part of King Edward Medical University for my higher education, that is MPhil anatomy. And मेरे साथ रहे आप. I was a part of King Edward, where respectable Professor Dr. Mulazim Hussain was also there. So today I am going to discuss a topic, very important topic, that is AI platform. And whatever AI platform you use, the very first thing which is very important, that is a prompt engineering.
and we will go in detail about how to write a good prompt and what are the differences between the good prompt and bad prompt, and first of all, what actually prompt is. So prompt is an instruction or question or text you type in AI tool like Gemini or ChatGPT. There are multiple, LLMs, but I prefer Gemini. Why Gemini? Because as I was discussing earlier with Professor Rashid, that Gemini is actually not even just a tool, rather it is an ecosystem. How it is ecosystem? Because it is a product of Google, and Google has many other tools or platforms like we use on daily basis, like Gmail, like our calendar, Google Calendar, like Google Drive, like Google Slides. So they all gel in because they are the product of same company. So they all gel in and they go along with each other very well. So now again on prompt, what is prompt? Prompt is an instruction or question or text you type in AI tool. It is just like a conversation or command or a starter, conversation starter. So for example, you tell AI tool to write a short poem about a cat. It will generate just a poem for you. So whenever, for example, when being a medical, having medical background, we are all uh, trying to learn this skill uh, uh, as a medical doctor. So can create a lot of things with the help of these, for example, MCQs, learning objectives. For example, we can write emails, we can do get help in research. uh, so here you can see this is where my cursor is moving. This portion is called prompt box, or prompt field. Here you write your prompt. uh, so whatever instruction you want to give to your LLM, that would be a prompt, and it would be written here. Acha ji. Then we have a structure of a prompt, how we can structure a good prompt. That is, this is the CRISP model. CRISP model, how to talk to, we talk to Gemini in natural language. Natural language is the way we speak in our daily life. And when we know that computer, it has its own language, which is a digital language, but we speak to, this AI in natural language. Here you have to आपको अपने we have to frame your prompt. So this is the CRISP model. C for capacity and role. So what does it mean, capacity and role? You have to give your AI model a role. For example, if you are, for example, as I am an anatomist, so I tell AI that act as a professor of anatomy. If I would be just giving AI a command that give me MCQs from head and neck region, it will produce, still produce MCQs, but those MCQs would be very generic. Those MCQs would be unfit for or unsuitable or not aligned with medical needs of a medical student. So to be precise, we have to. That's why we are framing our, this our prompt. So CREST model C for आपने उसको बता दिया कि you have to tell him that you act as a professor of anatomy, act as a professor of physiology. Act, for example, if you are asking for some gardening tips, you can say act as a gardener who has experience of this many years. So first of all, you need to give a role to a AI. This if, so this primes the AI to use academic language rather than layman term. So only then AI would be, in a better understanding that what you are looking for, or what you are looking up to. So second, there is R, C for capacity, and second is R, that is receipt or insight. What is provide always provide a background or context to AI within this your prompt. आपने जो prompt बनाया उसी के अंदर first you will, आप उसको AI को एक, वो भी मैं आपको एक example से, इसके बाद later on I will make it more clear. तो अभी just you just keep listen.
फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उसको एक रोल दे दिया, सेकंड आपने उसको कॉन्टेक्स्ट देना है. यू नीड टू गिव योर AI a context. For example, what I do, I am act as a professor of anatomy and give me MCQs for MBBS students कि आप उससे क्या चाह रहे हैं. You have to give it a role and background. I'm preparing a lecture of first year MBBS. This is the background. What who has just finished a musculoskeletal block but haven't started neurology yet. So AI now knows exactly that it has to explore the musculoskeletal portion only. It doesn't have to enter into the neurology. So why prevent AI? This prevents AI from using concept the students haven't learned yet. So this is the now third thing in CRISP is CRI, that is instruction. What is instruction? Instruction is actual task you want AI to be performed. For example, create 5 multiple choice questions. Now exactly AI knows that it has to create multiple MCQs, multiple choice questions, focusing on the for example आप उसको ये बता सकते हैं कि भाई मैं व्हाट आई डू, मैं उसको ये बताता हूँ कि मुझे 5 एमसीक्यूज चाहिए और उन एमसीक्यूज की ब्लूम टेक्सोनॉमी पे C1 C2 C3 क्या वो होनी चाहिए, उसकी ग्रेडिंग क्या होनी चाहिए, शुड दे बी सिनेरियो बेस्ड और दे शुड बी जस्ट स्टेम उनकी एक हो और वो C1 बेस्ड हो. सो दिस इज हाउ आई कैन command my AI. Number third is the style, CRIS. Style is what should be the tone of the output. For example, if you're writing an email and you're writing an email to your boss, obviously that tone would be formal tone. So AI knows that it has to produce an email which has formal tone. If you are writing your letter to your one of your friend, obviously your tone would be informal. So this is how your AI knows that what tone it has to follow. And the second thing is that CRIS. Now again, format. So you want your AI to produce the output in certain format. For example, if you tell him that I need MCQs, 5 MCQs, it already knows that what are MCQs and and it should have 5 options. So it can be that way. You can also tell produce in a tabulated form, produce your output in bullet form. So this is how. So we have done 5 things which are based on the CRISP model. C for capacity or role, R is the receipt or insight background, and I for instructions, S for style, and so this is and again P for personality, and F for format. So again here what is iteration or experimentation? Iteration is something, for example, if you have just produced output from the AI, but you are not satisfied with its output, what you will do, which you will just rewrite your prompt, and you will rewrite your prompt by improving it further. So this improvement of prompt again and again is called iteration. So this was one important terminology. Asking the AI to try again or refine its answer, this is called iteration. For example, in medical context, that's good, but make the distractors or wrong answers more challenging by including enzymes from the Krebs cycle. So this is how you can again and again experiment, iterate, and produce the better results. Keep on doing that until you get what you are looking for. Okay, for example, here we can see that here we have a difference between good or bad prompt, or uh, before and after. So now the beginner prompt is write an MCQ about the heart. For example, this is very layman and beginner prompt.
You are telling AI to write you MCQ, because it will still produce MCQ, but that MCQ would not be sufficient enough for the MBBS level student. So what you're going to do, this is then after using crisp model, professional prompt, you can you can tell that AI that act as a professor of anatomy, that is C capacity. And then I am teaching first year medical students about the mediastinum. Now this is what this is background, what you are giving your AI. Number 3 is create one higher order MCQ about the relations of the left atrium. So this is again what this is, instruction. Use formal USMLE style tone. This is tone you are giving to your prompt. P is present in the clinical vignette, followed by, now this is P is the output, what in what sort it has to produce output. आप उसको फाइनली वो दे रहे हैं कि आपको आउटपुट किस फॉर्म में चाहिए. सो फॉलोड बाय क्वेश्चन. एंड नंबर 5 इज आप if you want to further improve it, you can further experiment with your prompt, and that is called iteration. And beside that, there are some very important concepts or terminologies we use in AI sciences, and they are important to understand. They have equal importance. For example, number 1 is hallucinations. So in clinical terms, hallucination is a sensory perception without a stimulus, but in AI, hallucination is when model generates a confident response that is factually incorrect or nonsensical. For example, as you know that this AI, it is created by giving a massive data. When we say massive data, it means billions and billions of the documents they have been given to the AI, and AI actually learns the patterns instead of patterns. For example, if you tell AI the sky is, you don't write next word that is in your mind. For example, it's blue. You just write the sky is. AI will automatically write blue, because why? It has read a billions of documents. It knows that it is the most appropriate word after these two words. The sky is blue. Otherwise, there are many other options. The sky is cloudy. The sky is invisible. But as I told you, AI uses patterns, so automatically it knows that the most appropriate and most frequent word which humans use is blue, so it will automatically write blue. So this is how AI can make mistakes, and these mistakes are called hallucinations. Hallucinations is, as I just explained, it is something which is factually not correct. So it is you as an expert. For example, if you are a physiologist, you know your subject very well. If you are a pathologist, you know your subject very well. You know that AI is factually incorrect here. So what you're going to do, that is called hallucination. This is why another concept which is human in loop is very important. Human in loop is that never ever trust solely on AI for the you know its output. Whenever it gives you some output, always as a human being, it's your responsibility before delivering it further forward. It's your responsibility to make sure that every fact, every is factually correct. The material you are handing to your student is factually correct. So that is, again, here I will for example, asking an AI for the landmark study from 2024 on the innervation of the fifth ventricle. Since the fifth ventricle isn't standard anatomical structure, fifth ventricle तो होता ही नहीं है heart में, but AI ने hallucinate किया. It says that there is a fifth ventricle. So being an expert on the subject, you can fix it. Okay, again, iteration, as I previously just explained. What is iteration? Iteration is process of repetition of a prompt, improving it slowly, bit by bit, until you get your results, what you are looking for. For example,
You ask for a quiz on brachial plexus, it is too easy. You iterate by saying, now make these questions clinical, focusing on Erb's palsy and Klumsky paralysis. So by iteration, slowly and gradually, you are improving your, output. So this is called iteration. Number third was the human in loop. As I just mentioned, that what is human in loop? Human in loop is a requirement where an expert, for example, in case if you are an expert on that subject or on that matter, you have to verify that AI output is actually factually correct, and it is not hallucinating. Only then you can hand it over to your students. For example, medical example, you use AI to generate patient case study for PBL, problem based learning session. You must read it to ensure the labs, for example serum potassium level, are physiologically possible before handing it to the students. It means you are the safety valve between AI tool and your student. So you have to be, that concept is called human in loop. Now, chain of thoughts is asking AI to show it work or explain reasoning step by step. So, what does it exactly mean? For example, if you gave your AI a very complicated or complex, topic, obviously it's going to produce, the output. What you're gonna do? You will ask AI to explain its output step by step. So AI will generate reason for every step. So this is how you can actually mitigate or minimize the hallucinations. So this is called chain of thoughts. So you break the complex idea into smaller ones, and these smaller ones, and asking the AI to give reasoning for each step. So this is how, when AI will give you reasoning, so maybe it previously it has made some mistake, it will rectify it. Medical analogy, for example, like asking a student to perform a differential diagnosis rather than naming the disease. This is how what we humans do all the time in our clinical settings. What we do, we especially the clinical people, they make differential diagnosis on the basis of investigation, symptoms, signs, and everything. They don't jump onto the conclusion, rather they give a justification or logical explanation for every differential diagnosis. This is how they finally reach to a final decision what actually disease is. For why use it, clinically significantly reduces hallucination in a complex subject, for example, like acid base balance or pharmacokinetics. Then end your prompt with explain your reasoning step, whatever you write, and in the end you will write explain your reasoning step by step before providing the final answer. So this is concept is called chain of thoughts. In chain of thoughts, what you do, you basically uh, divide a complex, for example, complex idea into multiple small, and you ask your AI to give its reasoning step by step. So this is how you reduce the, basically, the hallucinations. So delimiters, what are delimiters? These are special characters like hash or hyphens or commas or something like that, used to separate. For example, you don't write your prompt in a single sentence without making any sense. Rather, when your one sentence is finished, the your AI machine needs to understand the that next sentence has started. So what you're gonna do, you're gonna use these signs which are called delimiters. For example, medical analogy, like pronunciation in a medical record, it separates the subjective from objective finding. So the reader knows which is which. If you are pasting long paragraph from a book and want the AI to summarize it, use delimiters. For example, summarize the text found between the triple quotes. For example, you will use these quotes,
these signs, and you will paste your, for example, these are triple quotes, these two. Here you will paste your text, and then you will tell it to summarize the text between the triple quotes. Now your AI exactly knows that it has to summarize this particular paragraph within these quotes. So this is again the final, mm, what you say, summary of the our this small presentation, which is crisp model, define capacity and concept, set clear instructions and styles, specific what in what form you want your output. So this is how your prompting is. Now we I will go move to the your here we have our Gemini. uh, Here you can see a sidebar. Here you can see the sidebar. Here it is your prompt field where you write your prompt, and beside that we will keep on discussing these features one by one. So here you can see, if I bring my cursor to this Gemini sign, it says open the sidebar. So here it is, sidebar. In sidebar, there's down we have got a list of items. Number one, first of all, new chat. Wherever you will start, you will you want to start a new chat, you will go to this new chat. Simply it will create new chat window. Here you can start your chat. So these are search chat. For example, you have done hundreds of chats, and you don't exactly know which chat is where. Here you can search your chat depending on the what you need. And here image library, gems I will be discussing in a while. What are gems? Here you can see these are long list of chats which I have already done with the AI. So okay, now I'll use my another account, because this of my account is restricted, because this belongs to previous institution where I used to work for. So it is for students, restricted it. Now here you can use your Gemini, but if you have a Google account. So when you sign in with your Google account, you will have this you know window in front of you, where Google search, and here you can see the 9 dots. So you can just press the 9 dots, and here Google has got its all the other tools. They are present here, from YouTube, Gemini, Gmail, Play Store, Meet, Drive. Everything is here. So it's a long list. So what we are looking for right now at that is Gemini. So we will just click on Gemini. So here we are with the Gemini. So as you know that I use my personal, Gmail account. So it is saying hi anatomy for medical, because I have a YouTube channel for medical students. So I've named it anatomy for medical students. So it is you know mentioning my name. So here we have sidebar. We are going to open sidebar, uh, and as I told you, here we have a list of previous chats. So you can, for example, any previous chat, you don't here you can see three small dots. By using these three small dots, you can do a lot of things to these chats. For example, if you want this chat to be on the top, you just pin it like this. It will be pinned to the top. For example, here it comes. If you want to rename this chat, you can rename this chat by saying blood supply of GIT instead of blood supply of GIT. For example, it will rename it. Here the name has been changed. If you want this chat to add to your notebook, and what is notebook? That
two I will discuss. If you want to delete this chat, you can delete this chat. So as you can see that there are hundreds and hundreds of chats down here, and they are not organized, they are disorganized. I don't know which chat is lying where. So for that, what I can do, I can create a notebook. Here I have notebook. Now I can मैं in chats में से I can जो similar chats हैं, I can bring them together. For example, I say anatomy chats. I name it anatomy chats. So this anatomy chat I can add to notebook. For example, ischiorectal fossa, there was another chat. I can add it to notebook, my anatomy chats. Now you see under the new notebook, I can see the anatomy chat. This is my notebook. I will keep collecting the similar chats together. So this notebook has created the anatomy and mechanics of pelvic diaphragm. For example, I just which the two chats which I just added to this notebook, they are right here: blood supply of GIT and ischiorectal fossa. So this notebook is used to organize your chats in a way the similar chats can be grouped together in particular notebook. For example, if you are looking for example, some particular topic, if I'm going to prepare my lecture, I can use these anatomy chat notebooks, and I can go into this, and my new chats will be automatically saved here. For example, if I'm not right now in a mood to prepare my lecture, I'm interested in gardening, I can create a notebook for gardening where I have gathered my similar chats in this notebook. So I guess the concept or idea of the notebook is a bit clear. Now here you can see this plus sign. Rather, I will start new chat. Here you can see a plus sign. This plus sign, if I I this press this icon, there will be a lot of further tools down there. For example, upload file. I can use this icon to upload my any other document, like it could be PowerPoint, it could presentation, it could be Word document, it could be any diagram, any picture, whatever is stored in my computer, it can be uploaded in this Gemini. Number two is add from AI drive. If I, this here, you can see I can add any of the, for example, nerve and posterior of the posterior compartment of thigh. Now it has been added here. Now I tell this AI to create a summary of this lecture or infographic summary of file attached. So it's gonna take few moments. So here you can see it has created, but it is still a text. It is not an infographic summary. So what I'm going to do, I'm going to create image from the same tools, and I tell it create infographic summary of the file attached. Now, okay, it's telling your uploads are too large for the best results because content is too much. So that's why it is
giving me this. Okay, this was okay. Now, as you have seen that uploading files, you can upload files from your computers, document, pictures, text, whatever. You can directly upload your content from your Google Drive. Google Drive, again, it could be, you know, your any uh, document like lectures, your exam papers or whatever. Again, you can upload your photos, you can upload your. Now create an image. This is another very uh, create an image. For this, I will show you, okay, how I used it. As you can see that this is an image. This is my mnemonic for my students to make them remember the muscles of the medial compartment of thigh. I always had this idea in my mind, but I never had a chance. I just used to explain verbally to my students. But now, for the very first time, 2 days back, 3 days back, I used AI to create the picture out of that my wild idea which I had only in my mind. So so it now it becomes very easy for me to show my student this diagram. I call this family. For these are all adductor muscles of the medial compartment of thigh. As you know that there are a lot of muscles in the thigh region, so student most of the time they forget, they don't um, understand that what are the names. They forget the names of the muscles, they forget their nerve supply and things like that. So what I did, I created this a comic or character or a family. I call this family adductor family, where adductor Magnus is the father, and he eats cheese sandwich. Double cheese sandwich means it has got dual nerve supply, and he is obese, as you can see. He has got two sons. The elder one is adductor longus, he's also obese, and the you know younger one is adductor brevis, and he's also obese. What is and it is and she is their grandmother. G for grandmother, G for gracilis. So obese, 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 obese means they are all supplied with the help by the obturator nerve. OB of the obturator and OB for obese. And again, here you can see I have this is pectineus. I call this muscle pectineus because it has got dual nerve supply as well. Students always remember that this muscle has got dual nerve supply. So what I did with the help of this AI tool, I gave this pectineus a t-shirt in two shades, so that my students, they always, if they remember this diagram, they will having a lot of things they will remember, like they are all supplied by obturator nerve. And this adductor magnus, it has got dual nerve supply, obturator plus sciatic. And whereas this pectineus, it has got dual nerve supply because of two shades of the color, femoral and obturator. So this is how you can use this AI tool for the wild ideas, for whatever is in your mind. You can use this AI to create for you. For example, if I want to tell this AI, uh, for example, create an image of a cat playing snooker and having cigar. Now this is wildest idea. No, photographer has ever taken a picture or such a picture, but this AI can use its imagination and ideas. I guess it's not working properly. uh, Again, I'll try it. I use my other account for this. Create an image of a cat playing snooker with cigar in hand.
It's going to take few moments. Bear with me, please. Here we have. So this was the wildest idea. I mean, nobody ever thought of, no photographer ever thought of taking such a diagram, such a picture, but AI has made it possible. So you can use this AI tool to create different, pictures or diagrams for your students. So again, here we have learned upload file, for example, upload file from your computer, from Google, and create image. And now here we have got a canvas. Canvas is another very important tool, which is has been recently integrated into this Gemini. But before going to canvas, I'll just show you another thing. For example, write an email to uh, head of department, head of anatomy department, regarding issues in the anatomy museum that we are in shortage of anatomy models. So we should be, you can use your same crest model here as well, but I'm just because of shortage of timing, so I'm going to make it short. Model should be promptly provided, immediately provided. See, here it has created an email. Yes, it has created an email. Subject, dear doctor, but there the name of the head of department is missing. My name is missing, and my designation and every information is missing. So if I keep putting them here, name of the HOD is Dr. Professor Ashfaq, Muhammad Ashfaq. See, here it has put Dr. Professor Muhammad Ashfaq here, but the rest of the details are still missing. So I keep on doing that, and for that I need to go again, scroll up and down, scroll up and down. So what they have done, they have integrated another tool here, which is called Canvas. So when we apply Canvas, I will again, copy this prompt and put it here in prompt box, paste it here. So from down here, I have pressed the icon of Canvas. Again, this is Canvas. Now see, the same output would be created on another panel, which is in a while. Yes, here it is. The same thing has been created here. This is an wholly solely another panel, and here we have got prompt box. So now, what was the reason of showing you previous chat box, and what is the difference? Difference is that you can change the details here at once, instead of scrolling up and down
आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल आई टेल हिम दैट फॉर एग्जांपल योर टाइटल, अच्छा मैं इसको अगर वो कर लूँ, हाईलाइट कर लूँ, तो ये मेरे से यहीं पे पूछ लेगा कि भाई क्या आपने चेंज करना है इसमें। आपने देखा कि यू जस्ट सॉ कि भाई यहाँ पे एक वो अपीयर हो गया मैजिक वॉन्ड के साथ, एक जेमिनी का वो अपीयर हो गया। मतलब ये हम क्या, व्हाट वी आर trying to learn, we are trying to learn the canvas is a feature which has been added. Instead of scrolling up and down, if you forget something, if you want to change or edit again and again the output according to your needs, instead of scrolling up and down, you just go into the side window, sidebar, another window here, another panel. You can change it all at once in single frame, instead of going up and down. तो ये एक किस्म का एक एडिटर है. For example, I tell my title or designation is professor as well. और अच्छा ये डिपार्टमेंट ये हो गया सर, डिपार्टमेंट एनाटमी और कॉन्टैक्ट नंबर वो भी आप अपना दे दें, तो ये इसको रियल टाइम में यहाँ पे आपके सामने इट विल चेंज इट. See, department anatomy has been changed, contact information and input, if I would have, it would have changed as well. So this is how you can edit canvas there and then what you can use this canvas for example, you can create a web page out of it. You can create infographic. What is infographic? Infographic is a summarized or with tables and beautifully it creates. For example, it is creating app. I wanted to show this is how this was my lecture to my students, and here again in the end you can see this is infographic. I just mentioned this is infographic summary. For example, Hilton's law. The information was already within that lecture. I just uploaded that lecture and I told it create summary of the out of this. So it created summary for me, obturator nerve injuries, and it created all on its own, all the information, detail, images. Sometimes it used the images which were already present in my slide. And here you can see this is again the infographic summary of this is some summary of my lecture. So what I do, I use AI to create learning objectives. I have fed all the uploaded all the documents from the University of KMU, which are study guides, and I told the AI to restrict itself to these mm, uh, uh, mm, files uploaded. Do not create something on your own. And uh, uh, you know uh, all the learning objectives are written in front of every topic. So what it does, it just extract those learning objectives on particular topic which I'm teaching that day, and it creates a list for me. I just paste it. And Thank you, in the end, Professor Ashiq. Very important and very beautiful. जी, जी. MashaAllah. And and in the end what I do, I already मैं उसको फीड कर देता हूँ अपना पूरा लेक्चर, एंड आई टेल द एआई टू क्रिएट इन्फोग्राफिक. बल्कि मैंने उसके लिए एक जेम बनाया हुआ, मैं भी आपको बताता हूँ कि जेम क्या है. इन द एंड ये मुझे इस तरह की डिटेल्स, मतलब कि एक बड़ा उसको मैंने ये भी आई हैव टोल्ड इट कि भाई मुझे किस किस्म का वो चाहिए, हैंड रिटन उसमें चाहिए, फॉर्मेशन में चाहिए, और उसमें कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट डिटेल्स मिस ना हो.
इस मेरे लेक्चर में, और इस तरीके से। और वो क्या होता है कि फिर इन द एंड पूरा लेक्चर बच्चे पढ़ लेते हैं, एंड पे ये स्लाइड उनके लिए ऑलरेडी इट इज देयर, बट सम स्टूडेंट्स दे गेट दिस स्लाइड आउट ऑफ इट, और वो एक जगह जमा करते जा रहे हैं ताकि उनके पास हर टॉपिक की जो है ना वो समरी हो। सो दिस ये हमारा था थोड़ा। अब नाउ व्हाट इज, अच्छा इसमें भी हम और भी बहुत कुछ कर सकते हैं इसके साथ। अच्छा जी, ये मैंने आपको बता दिया। अपलोड डॉक्टर आशिक, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। एक्चुअली इसको जब मैं बाहर पढ़ने गई थी ना, तो हमें ट्रेन किया था HEC वालों ने जी जी ऑन मेंटल मैपिंग इट्स कॉल्ड। ये जो AI आपके लिए करा है ना, वी वर एनकरेज्ड कि हम खुद ये काम करें, क्योंकि वो पूरे चैप्टर का, पूरे टॉपिक का खुलासा हम सोच सोच के ड्रॉ करते थे, मैप्स बनाते थे, तो फिर हमें बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ती है ज्यादा एग्जाम जी से पहले। मैडम, वो तो ऑलरेडी, जी जी प्लीज प्लीज। तो द AI डज इट। तो अब मसला ये है कि हम अपने दिमाग से क्या काम ले रहे हैं, हमें तो हलवा मिल रहा है प्लेट में। नहीं मैडम वो है, लेकिन वो जो लेक्चर का मटेरियल है वो तो सारा आपने खुद पुट किया हुआ है ना, और इन द एंड आप उसको फाइनल वो भी आप देंगे ह्यूमन इन लूप के उसमें ना, कि प्रोफेसर उसको। सलमा कुंदी, ये जो कुछ हो रहा है ना, दो आपका 2030 के बाद ये जवाब भी आपका वो हो जाएगा कि आप एक लेक्चर को जो पढ़ा रहे हैं, आप पहले हम चाक से पढ़ाते थे, फिर पावर पॉइंट आ नहीं, फिर वो इलस्ट्रेशन आ जाती थी, फिर पावर पॉइंट आ गया, अब AI आ गया। ठीक है, जब हम वो देने जाते हैं, प्लैब का एग्ज़ाम देने जाते हैं, या ये अभी फिलहाल HEC, बल्कि PMDC हमारे छोटी छोटी बातें कदगन लगाता है, लेकिन 2030 के बाद आप जो उसको प्रॉम्प्ट देंगे ये डिपेंड कर रहा है आपके ब्रेन के ऊपर। बाकी डॉक्टर आशिक ने तो एक ओपन किया है ना, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी की अपनी अपनी एक अलहदा वो बने हुए हैं, जिस तरह के ये AI के टूल्स बने हुए हैं। ये एक मेन लेकिन है। मेरे ख्याल में आशीष साहब पहले बिल्कुल। खत्म कर लेना, फिर इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ठीक, हाँ, ठीक। चलो ठीक, थैंक यू। ये सर दिस वाज, इसमें हमारे पास ये आ गया था, मतलब फॉर एग्जांपल क्रिएट इमेज, कैनवस पे आपने कैसे काम करना है, और कैनवस के डिफरेंट आगे से इस सारे मटेरियल को यू कैन शेयर विद समवन। और अगर आप चाहते हैं कि वो सिर्फ शेयर करके देख सके, उसको एडिट ना कर सके, आप वो भी कर सकते हैं, व्यू कर सके। आप उसको अपना कोलैबोरेटर बनाना चाहते हैं कि आपके साथ वो आपके टेक्स्ट को एडिट भी कर सके, वो भी मुमकिन है। तो अभी ये सर थोड़ा-सा मैं एक जेम के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि उसमें अगर गया तो बहुत डिटेल्स हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। व्हाट आर जेम्स? Gems are your customized, what you call it, chat GPTs और customized Geminis। ये आपने अपने हर जॉब के लिए एक जेम आप क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन गार्डनिंग, यू कैन क्रिएट अ जेम फॉर गार्डनिंग। वो आपको सिर्फ गार्डनिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देगा, फिर उस पर गाइड करेगा आपको। फिर आप उससे कुछ और कुकिंग का पूछेंगे तो वो इतना अच्छा, वो आपको वैसा गाइड नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन कुकिंग, और आप कुकिंग के लिए जेम क्रिएट कर सकते हैं। इफ यू आर मूवी वॉचर, आप उसको कहेंगे मुझे मुझे नई जो लेटेस्ट मूवी, साइंस जो भी आपको चाहिए, साई-फाई, एडवेंचर, वो आपको उस पर गाइड करेगा। So how to create a gem? For example, I have created few gems here. For example, infographic summary. ये जो मैंने अभी आपको बताई है जस्ट, इस infographic summary वाले जेम से मैं इसमें इसको मैं प्रेस करूंगा। फॉर एग्जांपल, ये देखें, ये मेरा infographic summary ओपन हो गया। अब इसमें ये मेरी प्रीवियस चैट्स हैं। दीज आर ऑल माय प्रीवियस चैट्स। सो व्हाट आई डू, आई जस्ट गिव दिस AI, फॉर एग्जाम्पल, इसको मैंने अपलोड कर दिया अपना लेक्चर पुराना, और इसको मैंने यहाँ से ये इमेज ऑलरेडी, क्योंकि ये क्रिएट ही ऐसे हुआ था, मुझे यहाँ से इमेज नहीं दबाना पड़ा, इसको पता है कि मैंने इमेज क्रिएट करना है। तो गिव मी infographic summary of this lecture। ऑलरेडी लेक्चर उसमें सारा फीड है मेरा, उसको मिला हुआ सारा मेरा लेक्चर। उसको पता है कि उसने वो सिर्फ इमेज क्रिएट करेगा, यहाँ पे उस सारी मेरे लेक्चर से सारी डिटेल्स उठाएगा,
जो मैंने इसको टेक्स्ट दिया हुआ सारा, जो इमेजेस दिए, मैं समटाइम इमेजेस ही अपने पास से डाल देता है, लेकिन मैंने उसको वो दिया हुआ, ये उस सारे को एक जगह पे ला के उसके वो क्रिएट कर देगा, समरी क्रिएट कर देगा इसकी। तो ये मेरे लिए आसान हो जाता है कि मैं उसको समरी को एंड पे पढ़ लेता हूँ, उसमें कोई अगर कोई कमी बेशी है, कहीं पे कोई टेक्स्ट थोड़ा सा वो गलत लिखा हुआ है, हेलुसिनेट कर गया है, जिस तरह कोई इमेज कहीं से हेलुसिनेट कर गया, तो मैं उसको दोबारा इटरेट करके आई जस्ट रिक्रिएटेड। सो दिस इज हाउ ये फॉर एग्जांपल देखें, ये इसने मेरी जो है ना सारी इसने वो क्रिएट कर दी है दोबारा। फॉर एग्जांपल पूरे मेरे लेक्चर की शियाटिक नर्व, इसकी इसने वो बता दिया कि ग्रेटर शियाटिक फोरामन कहाँ से, पिरिफॉर्मिस मसल, ओरिजिन बता दिया इस नर्व की, और पहले ओवरव्यू बताया, फिर उसके बाद ये कोर्स क्या है इसका थाई के अंदर, इवन उसके इमेजेस भी इसने डाले हैं, ठीक है, और उसकी ब्रांचेस कौन कौन सी हैं, टर्मिनेशन कहाँ पे होती है, ये पॉपुलेटरी फोसा तक उसने बनाया है, ठीक है जी। और इसकी ये सॉरी ये थी ये तो थी posterior cutaneous nerve of the thigh. So this is how you can use this tool to make things easier for your students. तो ये एक वो हो गया। अच्छा जी, अब जिम itself क्या है? जिम itself, अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि मैं कोई आप लोगों के सामने एक नया जिम क्रिएट करूं। ये फॉर एग्जांपल ये कुछ इन्होंने ये जेम्स हैं ऑलरेडी, ये बड़े एडवांस किस्म के जेम्स हैं, ये हमारे काम के नहीं है। ये फॉर एग्जांपल हम अब न्यू जेम्स में आएंगे, तो ये आपको न्यू जेम, अब आप फॉर एग्जांपल गार्डनिंग पे जेम क्रिएट करना चाहते हैं, तो आपने उस जेम को कोई नाम देना है। फॉर एग्जांपल आप उसको नाम दे दें गार्डनिंग किट कर दें, आप इसको नाम दें। अच्छा जी, अब ये आपसे पूछ रहे हैं कि डिस्क्रिप्शन की जिम करेगा क्या, ये जिम क्या करेगा, आप इसको बता दें you will have to guide me in my gardening skills। ठीक हो गया। अब आपने इसको इंस्ट्रक्शंस देनी है। अब इंस्ट्रक्शंस में आप इसको क्या देंगे, आपने वही जो आपका प्रॉम्प्ट है ना, आप उस प्रॉम्प्ट को थोड़ा सा वो करके, जिस तरह हमने क्रिस्प मॉडल पे हमने प्रॉम्प्ट सीखा था, हम इसको कहते हैं कि एक्ट एज अ गार्डनर। अब इसको पता है कि मैंने एज अ गार्डनर के तौर पे एक्ट करना है। एक्ट एज अ गार्डनर हु हैज एक्सपीरियंस ऑफ 25 years of who has experience of 25 years। अब आपने इसको थोड़ा सा आपने वो दे दिया, इसको रोल दे दिया। अब आप इसको क्या देना चाह रहे हैं, आप इसको बैकग्राउंड देना चाह रहे हैं। आई एम इंटरेस्टेड इन गार्डनिंग skills। I have small garden in my backyard। अभी आपने इसको क्या दे दिया, आपने उसको वो दे दिया, कॉन्टेक्स्ट दे दिया, ठीक है। You will have to guide me in planting न्यू प्लांट्स, ठीक है, नए पौधे, और उन पौधों में देयर सनलाइट डिमांड, देयर वाटर डिमांड, देयर, दिस इज हाउ यू विल कीप ऑन एडिंग के उनकी डिजीजेस क्या हैं, उनका वो क्या है, वो आपने सारी इसको इंफॉर्मेशन दे दी। अगर आप इसको वो दे देंगे ना, और ये जो वांड बनी हुई है ना, इससे ये आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख देना, आप इसको प्रेस करेंगे ना, तो ये सारी जो आपकी
जम्बल्ड अप किस्म की जो इंफॉर्मेशन है ना, उसको ये खुद एक अच्छे तरीके से लिख लेगा, खुद मतलब कि ये उसको रिक्रिएट करेगा उस सारी इंफॉर्मेशन को, ठीक है। और ये क्या है, फॉर एग्जांपल डिफॉल्ट टूल ये है कि फॉर एग्जांपल जैसा आई जस्ट रिसेंट आई सेड कि जिस तरह फॉर एग्जांपल मैंने इसको कहा कि इसने अब इसमें देखें फॉर एग्जांपल मैंने इमेज तो नहीं क्रिएट करवाना, हम तो इसे गार्डनिंग करवा रहे हैं, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, क्रिएट इमेज की ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि हमें से गार्डनिंग वो लेनी है, और वो गार्डनिंग जो जो वो टिप्स है वो हमें किस फॉर्म में देगा, हमें टेक्स्ट की फॉर्म में देगा, ठीक है। तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं, हम इसको प्रेस नहीं करेंगे। कैनवस, हाँ कैनवस को किया जा सकता है, हम कैनवस को इसको कर लेंगे, ठीक है। और इसके अलावा अगर हमने म्यूजिक क्रिएट करवाना है, इससे जेम हमने बनाई म्यूजिक के लिए, तो हम म्यूजिक वाला को कर देंगे। और अगर हमने कुछ और गाइडेड लर्निंग, जैसा फॉर एग्जांपल ये हमारा गार्डनिंग का, हम ये भी वो कर सकते हैं। या हम समटाइम्स कुछ भी ना करें, डिफॉल्ट रहने दें, तो इससे ये फायदा होगा कि जेम को वो अकॉर्डिंग टू प्रॉम्प्ट वो खुद समझ लेगा कि मुझे क्या इमेज क्रिएट करना है, या मुझे म्यूजिक क्रिएट करना है, या मुझे कोई इंफॉर्मेशन टेक्स्ट की फॉर्म में देनी है, तो वो खुद अपने आप को एडजस्ट करके वही वाला टूल यूज कर लेगा। और ये चीज है फॉर एग्जांपल नॉलेज। इधर मैंने क्या किया हुआ है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं भी आपको अपने जेम्स दिखाता हूँ, इसमें आप सोर्स डाल सकते हैं नॉलेज का, कि फॉर एग्जांपल आपने कोई एमसीक्यूज के लिए वो किया है, इसको तैयार करना है, तो आप यहाँ पे वो टेक्स्ट बुक डाल दें, जो आपके स्टूडेंट की टेक्स्ट बुक है उसकी पीडीएफ फॉर्म डाल दें इसके अंदर, और उसको आप इंस्ट्रक्शंस में ये लिख दें कि तुमने इसी टेक्स्ट बुक को फॉलो करना है, इससे इधर उधर नहीं होना, और मुझे इसी से सारी वो चाहिए, ठीक है। तो ये फिर उसी टेक्स्ट बुक को सोर्स के तौर पे यूज करके उसमें से ये जो है ना ये क्रिएट किया करेगा आपके वो। फॉर एग्जांपल ये अब आप देखें, ये मेरे आप वहां से सेव कर लेंगे, आपका जेम सेव हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये मैंने आपको दिखाया कि मैंने जो अपने जेम्स क्रिएट किए हैं वो इस तरीके से हैं। ये मेरे ये मेरे जो जेम्स हैं, फॉर एग्जांपल इन्फोग्राफिक समरी डेवलपर, लेक्चर टेक्स्ट डेवलपर। मैं समटाइम्स लेक्चर का टेक्स्ट भी क्योंकि मैंने बुक इसमें ऑलरेडी इनपुट की हुई है जेम में, तो मैं ये फिर मेरे लिए जो मटेरियल निकालता है ना। अब फॉर एग्जांपल आपको पता है कि बुक्स में कोई भी टॉपिक कुछ है, कोई ऐसा टॉपिक होता है जो थोड़ा सा कहीं लिखा होता है, थोड़ा सा कहीं लिखा होता है, थोड़ा सा कहीं लिखा होता है, तो आपको वो एंड बुक के एंड पे वो लिखा होता है कि बाकी का पेज नंबर उस पे, बाकी का पेज नंबर उस पे। तो इधर ये है कि ये सारे का सारा आपके लिए खुद एक्सट्रैक्ट कर लेगा जहां जहां भी है, और ला के आपकी स्क्रीन पे रख देगा, ठीक है। अब आप इससे उसके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनवा लें या जो मर्जी कर लें। अब ये बड़े मजे का एक जेम मैंने इससे बनवाया हुआ है, ये दैट इज एनाटॉमी डिक्शनरी, ठीक है। ये सिर्फ एनाटॉमी की टर्मिनोलॉजीज जो है ना, ये उनको एक्सप्लेन करता है। और मैं आपको थोड़ा सा इसमें एक और वो चीज दिखा दूं इसके बारे में। अच्छा, ये मैंने जो फॉर एग्जांपल एनाटॉमी की डिक्शनरी के तौर पे ये मैंने इसको वो क्रिएट किया हुआ है। इसको मैंने ऑलरेडी जेम को ये फीड किया हुआ है कि मुझे सिर्फ एनाटॉमी की टर्मिनोलॉजीज का, कि वो ग्रीक ओरिजिन की हैं या वो हैं लैटिन ओरिजिन की हैं, ठीक है जी। उस वर्ड का रूट वर्ड क्या है, उस वर्ड का मतलब क्या है, ठीक है। और उसके अलावा मैं इसको इसलिए यूज करता हूँ कि अगर उसके पीछे कोई स्टोरी है तो मुझे वो भी बताओ ना, कि वो नाम क्यों पड़ा उसका ना। तो इस तरीके से ये सिर्फ मेरे लिए सिर्फ ना, क्योंकि अब मैं अमूमन स्टूडेंट्स को बताता हूँ कोई भी नई टर्मिनोलॉजी आ गई कि ये टर्म क्यों क्रिएट हुई, इसका मतलब क्या। फॉर एग्जांपल कोराकॉइड प्रोसेस, हम भी जब सेकंड उसमें एमबीबीएस में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में होते थे, क्योंकि नए नए आए हुए थे, हमें भूल ही जाता था कि कोराकॉइड क्या है और एक्रोमियन क्या है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है। वो क्योंकि हम वो रटा लगाया हुआ था। तो फिर मुझे किसी ने एक दिन बताया कि कोराकॉइड जो है ना वो क्रो लाइक बीक को बोलते हैं ना। तो चूंकि उसकी शेप ऐसी थी, उसके बाद मुझे नहीं भूला कि ये कोराकॉइड है और ये एक्रोमियन है। तो इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास जब आते हैं, तो हमें बीइंग टीचर हमें ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं इनकी बड़ी वो होनी चाहिए, गिरफ्त होनी चाहिए कि भाई ये क्योंकि उसके पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी होती है समटाइम्स, कि क्यों ये नाम क्यों पड़ा। तो जब आप वो स्टोरी स्टूडेंट को पता चल जाती है ना, तो वो ही और शी ऑलवेज रिमेंबर्स कि भाई ये स्ट्रक्चर क्या है। फॉर एग्जांपल आप देखें कोराकॉइड प्रोसेस मैंने इसमें डाला,
अब ये मुझे कोराकॉइड प्रोसेस के बारे में बता रहा है। इट अपीयर्स यू आर रेफरिंग टू कोराकॉइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला। अब ये क्यों मुझे, दिस इज अ स्मॉल, ओ कहाँ गई मेरी चैट, सॉरी फॉर, हाँ यहाँ पे, हाँ जी। अब ये देखें, ये अब मुझे ये सारी इसकी एटमोलॉजी बता रहा। पहले इसने थोड़ी सी डेफिनेशन दी कि कोराकॉइड प्रोसेस क्या है, साथ में इसने इमेज खुद ही क्रिएट कर दिया मुझे समझाने के लिए भी कोराकॉइड प्रोसेस क्या है। और साथ में क्या किया इसने, इसने मुझे इसकी एटमोलॉजी बता रहा है। कहता है ये एंशियंट ग्रीक है, और इसने ग्रीक वर्ड भी इसके लिए लिखा है। और कोरैक्स मीन्स रेवन और क्रो, और एडियोस मीन्स शेप और रिजेम्बलेंस। हिस्टोरिकल एंड विजुअलाइजेशन इसने पूरी उसकी वो दे दी है कि भाई ये the early anatomist, most notably the father of anatomy, Galen, often named structures based on their resemblance to common objects. So this is how, ये देखें प्रोफेसर निमोनिक भी इसने मुझे दे दिया, क्रोज बी कोराकॉइड प्रोसेस। सो मैं कोई भी लेक्चर उस शुरू होने से पहले मैं हमेशा जो है ना उस वर्ड का, रूट वर्ड का मीनिंग सीख के जाता हूँ, ताकि मेरे स्टूडेंट्स को उसमें आसानी हो और दे डू अंडरस्टैंड थिंग्स वेल। सो दिस इज हाउ जेम्स दे वर्क। सो आई गेस कि भाई हमने अभी काफ़ी कुछ कवर कर लिया है, तो इंशाल्लाह अगर ये भी नए आइडियाज़ अगर हमें याद रहे तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट भी कोई एक और सेशन रख सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। क्योंकि इसमें डिटेल्स तो बहुत ज़्यादा, बहुत कुछ बताया जा सकता है, लेकिन ये थैंक यू प्रोफेसर आशिक हुसैन, माशाल्लाह। और ये हैंड ऑन वर्कशॉप थी, और आपने माशाल्लाह, मैं खुद देखता हूँ कि बेसिक साइंसेज वाले कितना माशाल्लाह वो तरक्की कर रहे हैं, थैंक यू जहाँ वेरी मच। रिबोटिक काम कर रहे हैं हम अपनी। जी राशिद साहब, यू हैव रेज द क्वेश्चन। जी सर, माशाल्लाह। ए क्वेश्चन फ्रॉम बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने फ्रॉम बताया, फिजियोलॉजी, प्रोफेसर ऑफ फिजियोलॉजी। बहुत डिटेल में बताया, और दिल तो नहीं चाह रहा था कि आप बंद करें, और क्वेश्चन भी बहुत सारे हैं। मुझे बताएं कि ये जेमिनाई में आपने जिक्र कर रहे थे कि आपने बुक भी अपलोड कर दी और केएमयू के से गाइड्स भी अपलोड कर दी, तो ये जब आप चीज़ें अपलोड करते हैं तो ये उसमें पड़ी रहती हैं, और क्या चैट जीपीटी में भी ऐसी कोई चीज़ है? क्योंकि चैट जीपीटी में तो आप एक दफ़ा एक लेक्चर अपलोड करते हैं, दूसरी इमेज लोड करते हैं, कहते हैं जी आपका ख़त्म हो गया अकाउंट। तो पर वो चैट, एक्चुअली, जी जी, हाँ, राशिद एक्चुअली साहब, ये पड़ा रहता है, ये अगर आपने अकाउंट लिया हुआ है ना, आपने बनाया हुआ, ये पड़ी रहती है। नहीं, मैं फ्री वर्जन की बात कर रहा हूँ, जी फ्री सर, वर्जन। फ्री वर्जन में भी रहती है सर, जेमिनाई में रहती है सर। अब मुझे, क्योंकि हमने चैट जीपीटी जेमिनाई इतना में यूज नहीं फ्री किया। वर्जन में भी रहती है। आप हर जो गुफ्तगू करेंगे, जब तक खुद अच्छा, डिलीट नहीं करेंगे, ये पड़ी और रहती है। और कोई लिमिट है जेमिनाई में? कोई लिमिट है? वो पूरी बुक अपलोड कर से एक दिन में कितनी इमेजेस या कितने लेक्चर्स या कितनी बुक्स अपलोड कर सकते हैं कुछ जेमिनाई? ये जेमिनाई का एक और वो है ना, नोटबुक एलम, ये जेमिनाई का ही एक नोटबुक है एलम, नोटबुक, वो आपको गूगल, खरीदना पड़ता है। हाँ जी, वो फ्री वाला वर्जन भी है। उसमें आप 40 के करीब सोर्सेज आप अपलोड कर सकते हैं, जिसमें वेबसाइट भी हो सकती है, जिसमें आपके डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, जिसमें बुक्स भी हो सकती है, वट एवर ना वो। और वो आप अपलोड करके, अच्छा उसका फायदा ये है नॉर्मल जेमिनाई के थ्रू, वो हेलुसिनेट कम करता है। क्यों? क्योंकि आपने वो आपके सोर्सेज जो आपने उसको दिए होते हैं ना, वो उन पे फंक्शन करता है ना, वो कोई बाहर से नहीं ले रहा। क्योंकि और आपने ऑथेंटिक और वेरीफाइड और ऐसे जिन पे आपको ट्रस्ट है, आपने वो सारे सोर्सेज को फीड किए हैं, तो इसलिए उसका जो है ना वो करने का चांस कम है। तो आप वो भी यूज कर सकते हैं, नोटबुक एलम, उसमें वो भी जेमिनाई, नोटबुक एलम, ये सारे एक ही उसके वो हैं। अच्छा, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो चैट जीपीटी कर सकता है जेमिनाई नहीं कर सकता, और वाइस वर्सा, जो जेमिनाई कर सकता है चैट जीपीटी नहीं कर सकता? एक्चुअली सच्ची बात बताऊं कि मैंने चैट जीपीटी इतना ज्यादा यूज नहीं किया, लेकिन अच्छा। चैट जीपीटी को लोग ज्यादा प्रेफर भी करते हैं, जेमिनाई को इतना ज्यादा, मतलब कि, लेकिन अब जेमिनाई का वो आ रहा है क्योंकि चैट जीपीटी ने पहले लॉन्च कर दिया था, तो वो जरा इस रेस में आगे हो गए तो थे। मैंने भी अब थोड़ा बहुत गया हूँ, जेमिनाई पे गया हूँ, तो बहुत मुझे अच्छा लगा, लेकिन थोड़े से उसमें ज्यादा कमांड देनी पड़ी। चैट जीपीटी में वो शार्ट कमांड पे काम कर देता है, जेमिनाई की तो थोड़ी सी लेंथी, जरा ज्यादा समझाना पड़ता है उसको। ये आम अल्फाज में यूं कहे कि उसको जी, समझाना थोड़ा ज्यादा पड़ता है चैट जेमिनाई को। इसमें ये आप और चैट, जेमिनाई, राशिद साहब, इसका मैं जवाब दूं। जी जी। तो कुछ अर्सा पहले जेमिनाई बेटर था। अब चैट जीपीटी का जो लेटेस्ट वर्जन आया है, वो ज़रा ज़्यादा बेहतर बनाता है। बट हम्म। डिपेंड्स अपॉन यू
कि आप कितना प्रॉम्प्ट देते हैं, किस तरह का प्रॉम्प्ट देते हैं, कैसा वो चाहते हैं। दोनों आलमोस्ट एक जैसे हैं, लेकिन जेमिनाई फ्री ज़्यादा है, ज़्यादा आपको वो देता है। और आपका एक जगह पे जाके जो चैट जीपीटी है वो रुक जाएगा जी, आप बस आपने वो ख़त्म और हो गया आपका कोटा। सर ये और तो आजकल एक्चुअली एक्चुअली रेस है ना सर, इसमें तो कभी कोई आ गया ना। लेकिन जो और जेमिनाई की मैं आपको बात बता रहा था ना, वो इसलिए वो है आ, जेमिनाई तकरीबन 40 ये 50 पिक्चर्स बना देता है फ्री। जी। और जो चैट जीपीटी है वो 2-3 के बाद कहता है नहीं बस आप नहीं अभी नहीं कर। अपडेटेड अच्छा, वर्जन। व्हाट अबाउट डीप सीक? डीप सीक जो है वो, उसकी क्या कैपेसिटी है, वो नहीं, कितना अच्छा है? डीप सी किससे जी आशिक, सॉरी मैं जवाब दे रहा हूँ, आप नहीं नहीं सर, आप दें प्लीज प्लीज। नहीं नहीं डीप नहीं, दे सीक दे बस सर, बस बस। नाम ही सुने सर डीप सीक का। नहीं नहीं, दे बस, सॉरी सॉरी। नहीं नहीं सर, प्लीज आप दें सर जवाब। नहीं नहीं, दे डीप सी का पता है मैं। सर वो मैंने वही वाली बात है, मैंने जेमिनाई पे काम किया है हाँ, डीप और सीक मैं बताता नोटबुक हूँ, एलएम ऐसा पे है कि काम किया डीप सीक चाइना का है। है। जी, चाइना और का है। जब भी आप कोई जी जी, जब भी आपको वो ज़्यादातर लिटरेचर के तौर पे आपको बताता है कि आपने एक मैं आपको बड़ा इंपॉर्टेंट बताऊं, आप एक स्टूडेंट की वो बना लेते हैं, सिनॉप्सिस बना लेते हैं। और आप सिनॉप्सिस आपको ये देखते हैं कि इसने कितना खुद बनाया है, कितना चोरी किया है। डीप सीक में आके जाके उसको एनालिसिस करते हैं कि जनाब ये मेरा जो काम है ये हम्म। कितना ठीक है और कितना गलत है। तो या आप आर्टिकल लिखते हैं तो आर्टिकल जैसे रिव्यू कर रहा होता है, तो डीप सीक में जाके उसकी सारी चीज़ों को वो करते हैं। आप फिर आपने ठीक करके फिर डीप सीक से पूछते हैं मैं कितना ठीक जा रहा हूँ। एक चैप्टर लिखते हैं तो डीप सीक हाँ एक्चुअली। लिख लिया जी जी। राशिद था। अच्छा, और ये जेमिनाई में उर्दू है? उर्दू टाइपिंग, जी उर्दू उर्दू, राइटिंग? बिल्कुल, मैं सारा दिन उर्दू में लगा रहता हूँ। जी सर। और उसमें आपने दो चीज़ों का क्या, फॉन्ट और ख़त, ख़त अरबी या ख़त नस्तालीक, वो आपने प्रॉम्प्ट देना है कि जी इसमें मुझे लिख के दें। आप अभी जेमिनाई खोलें और कहें कि जनाब मुझे मुलाजिम हुसैन बुखारी साहब के रेफरेंस बताएं कि आज तक इनको कितने लोगों ने साइट किया है। तो और हम्म। ये उसका जवाब उर्दू में दें, ख़त नस्तालीक में दें, आपको अभी जवाब आ जाएगा। फिर सर गुड। जेमिनाई के साथ आप अपने वो लिंक कर सकते हैं ना, आपकी ईमेल अकाउंट और वो सारा कुछ। आप आप सिर्फ कुछ भी आपने ना ईमेल नहीं करें, खोलनी, आप आपने कुछ इसको भी ना बोलना। करें आशिक हुसैन, आप कुछ भी ना करें, ये खुद उठा लेता है अब। ये जी, उठा लेता है। आपने कनेक्ट किया हो, ठीक है आप ना। इसको कहें कि मुझे मेरी ईमेल और कैलेंडर देख के मुझे ये बताओ कि मैं ये फलान दिन मैं एक मीटिंग रखना चाहता हूँ, हो सकती है कि नहीं हो नहीं, सकती। उसके लिए मैं सबको एक और बात कहूँ, एक मेटा एआई होता है। जी सर। आप कुछ भी ना करें, आप अपनी ईमेल और सारी उसके साथ मेटा एआई के साथ कर लें। मेटा आई से जो जवाब पूछेंगे कभी भी नहीं थकेगा और पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। आप मेटा जी सर। एआई, META मेटा और एआई। लेकिन एजुकेशनल एक्टिविटी में कहूँगा एनाटॉमी वाले एक उनका अपना सॉफ्टवेयर है वो लें, बजाय इसके कि आप एक चैट जीपीटी या जेमिनाई को, पैथोलॉजी वालों का मैं डिजिटल पैथोलॉजी पढ़ाता हूँ, उसका जो है सॉफ्टवेयर मुझे परचेज करना पड़ता है। मैं जब अपनी स्लाइड देता हूँ तो वो मुझे 5 मिनट में डायग्नोसिस और उसके इम्यूनो मार्कर करके बता देता है, बट यू हैव टू परचेज। अच्छा सर। ये भी वो मैं बहुत भी सर, ज़्यादा है कि आपने आप फ्री में हर चीज़ मैं मिल जाती है। एनाटॉमी के लिए मुझे पता चला था, एक एक ऐप है जो मैं आप आपको किसी से भेजूंगा, मैं वो डिजिटल लिंक भेजूंगा, फिजियोलॉजी वालों को अपना क्रिएट लिंक करके भेजूंगा। देती है आपको मैं ना, भेजूंगा, इमेजेस क्रिएट करके देती है मैं और भेजूंगा, नियर मैं टू भेजूंगा। परफेक्शन। या आप नोटबुक एलम से लें, नोटबुक एलम में 40 लाख जर्नल पड़े हैं। जी सर। और वो साइट आपको सही देता है, जी लेकिन सर। उसके अंदर फ्री ना करें, मैं कहूँगा फ्री में ये गलती कर देता है। जी सर। आप परचेज करें। अच्छा, और बड़ा सस्ता है जेमिनाई, बहुत सस्ता है जेमिनाई, बहुत हम्म, सस्ता है। हम्म। कितना रेट है, कोई आइडिया है? मैं 9,000 में पूरे साल में लिया हुआ, मैंने 9,900 कुछ। साल का? ये काफ़ी अरसे से लिया हुआ है। हम्म। 500-600 मतलब एक, रुपये। आप फाइव महीने के। हंड्रेड पर मंथ पड़ता है। फिर हाँ, तो जो अच्छा है। आपका सॉफ्टवेयर है वो महंगे हैं। और मैं मसलन मैं आपको 56,000 में ख़रीदा हुआ है मैंने डिजिटल पैथोलॉजी का, वो महंगा है हाँ। साल का। साल का। जी प्रोफेसर एन ऑफ एनाटमी, प्रोफेसर यसूफ नकवी साहब भी बैठे हैं। प्रोफेसर यसूफ साहब,
अस्सलाम वालेकुम सर। प्रोफेसर यूसुफ साहब, आपके साथ इन्होंने वक्त गुजारा हुआ है आशिक हुसैन ने एनाटॉमी में। मेरे खान म्यूट म्यूट है आशिक। एनी अदर क्वेश्चन प्रोफेसर सलमा, आप कुछ कह रही थी मैडम? नहीं, बस वो हैंडल हो गया, जवाब आ गए। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही ये हूँ ये कि इजाजत है। ये देखें, ये इजाजत है। आप अपने स्टूडेंट्स को इतनी मेहनत करते थे। अब आप, मैं आपको प्रोफेसर सलमा सीधी सीधी बात बताऊं, 1996 में जब मैंने पहला आर्टिकल लिखा था तो 4 इंग्लिश दानों को कहा था ये ठीक कर दो। पहला मेरा आर्टिकल कॉलेज ऑफ फिशन में छपा था तो एक एक के पास लिख के जाता था, यार मुझे पढ़ के जबान ठीक कर दो। अच्छा, फिर पेड वर्जन आ गया कि जनाब हर करेक्शन के इतने पैसे मिलेंगे। देखिए, दिस इज नॉट बैड अगर आपको एआई आ जाए। टीचिंग के अंदर 3D भी बना देता है ये पेड में। सर, अब मसला ये हुआ है कि अब पहले मैं लेक्चर बनाता था किताब पढ़ के। अब मुझे किताब पढ़ने की आदत भूल गई है। मैं एआई को कहता बना देता है तो वो मैं प्रेजेंट कर देता हूँ, मुझे खुद अब नहीं आता। इशू अरे ये हो कोई रहा है। खास फर्क नहीं पड़ता। ये आपका मेरा पुराना 60 साल पुराना जहन है। आप उतना चाहिए, जितना उतना वक्त चाहिए जितना पढ़ना पड़ता है। एनाटॉमी ग्रेज मैंने पढ़ी थी, मुझे पता है। अभी भी मेरे पास पढ़ी थी, उठा के लाता। आप उतना पढ़ें जितनी ज़रूरत है। बिल्कुल। अब तो सर उतना नहीं पढ़ा कि आप सर, पूरी वो पढ़ते रहें। मौलाली का सर वो कौल है ना कि इल्म एक समंदर की तरह है ना। जी, वो इल्म तो समंदर है। इसका अहाता नामुमकिनात में से है ना, बस इसके बेहतरीन हिस्से को हासिल कर लो ना। मतलब जो भी आपका सब्जेक्ट है उसका बेस्ट पार्ट आपके पास अगर आ जाए तो जो आपकी जरूरत है, तो दैट्स असल में इनफ। दस दस बंदों को, मैं सबको कहता हूँ, 10 बंदों को मैं रिव्यू के लिए ब्रेस्ट कैंसर इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा की स्लाइड भेजा करता था। वो कहते थे उसको ईआर कर लो, पीआर कर लो, हार्ट टू न्यू कर लो, फलां वो कर लो, ये मार्कर कर लो, ये मार्कर कर लो, ये वो कर। अच्छा, अब मैं उसी पेड वर्जन में स्लाइड बना के डिजिटल पैथोलॉजी के ऊपर लोड करता हूँ। वो मुझे सारे बता देते हैं, इसका ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये है, ये है। तो दैट इज़ अ मार्वलस थिंग। पेशेंट की जो है वो डायग्नोसिस बेटर हो गई है। और इसको कहते थे एक पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, वो बेहतर हो रही है अब। एनी अदर क्वेश्चन प्रोफेसर सलमा, आप बताएं, अप टू यू, आप इसमें कमेंट दें। प्रोफेसर काशिफ जैदी साहब भी बैठे हैं, अगर कुछ, काशिफ जहीर साहब भी बैठे हैं। मेरा तो ये है कि टीचर्स के लिए तो चलें, ये ठीक प्लेटफॉर्म्स हैं। स्टूडेंट्स भी इनको यूज करते होंगे, तो मैं चाह रही थी कि स्टूडेंट्स इस स्टेज पे अपना दिमाग यूज करें तो ज्यादा बेहतर नहीं होगा? जैसे ये मेंटल मैपिंग करके हमें वो बहुत प्यारे प्यारे डायग्राम्स, वो जो बर्गर खा रहा था ऑप्टेरेटर वाला, और सारा वो ग्लूटियल फैमिली, तो अगर स्टूडेंट्स खुद ड्रॉ करके बनाएं, फिर आशिक उनको रिफाइन करके ये स्लाइड दिखा दें, आई थिंक इट विल बी तो वेरी वेरी होमवर्क देते बेनिफिट। हैं ना, वर्कशॉप में होमवर्क देते हैं, ड्रा करें ये आप। ठीक है। मैं कमेंट करूं मैडम इस पे? डॉक्टर शर्मा, अब असल में बात यह है कि हमें इसके लिए स्टूडेंट्स जितना अच्छा देखें, जब जब आशिक जो लेक्चर उनको एआई से बना के दे रहे हैं, स्टूडेंट खुद भी एआई से बना के खुद भी पढ़ सकता है। असल चीज ये है कि हम जो है ना उसके उसकी असेसमेंट सिस्टम इम्प्रूव करें, तो वो खुद ब खुद किताब भी पढ़ेंगे, डायग्राम भी डालेंगे। अब हमारी यूनिवर्सिटी जो कहती है कि सिर्फ करें जीक्यू जी, अटेम्प्ट करो, सही कहा। ठीक है, तो अब सिर्फ एमसीक्यू में तो जाहिर है उसको क्या काम है कि वो डायग्राम बनाए, ऑर्गेनाइज करे। तो हम हमें अपनी असेसमेंट ऐसी बनानी होगी कि चाहे वो जो भी यूज करे, मेरे लेक्चर में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे मेरे लेक्चर से सुने, यूट्यूब से जाके सुने, एआईसी सीखे, जहां से भी सीखे, मेरी असेसमेंट ऐसी होनी चाहिए कि वो मजबूर हो जाए कि जिस तरह मैं चाहता हूँ उस तरह पढ़े। तो हमारी जो है ना असेसमेंट ठीक नहीं है। हमारी असेसमेंट बिल्कुल ठीक नहीं है, एसईक्यूज उड़ गए हैं, ऐसे टाइप क्वेश्चन उड़ गए हैं। पता नहीं, बच्चे बेचारे पढ़ के एग्जाम तो देते हैं, लेकिन आई एम श्योर कॉन्सेप्ट्स तो उनके क्लियर देखिए, नहीं होंगे। वाइवा सेशन खत्म हो गए हैं, जो प्रैक्टिकल परफॉर्म करवाते थे आधा आधा घंटे के, एक ही घंटे की, वो खत्म हो गए हैं। 3-4 मिनट में उससे कहते हैं कि भाई आप अपना वो स्किल भी हमें बता दें, वाइवा भी दे दें। और कोई मेरे स्टूडेंट ने फर्स्ट ईयर में 84% मार्क्स लिए,
सेकेंड ईयर में उसको मैंने पूछा, उसे टेकीकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया की स्पेलिंग नहीं आती थी। तो कहते सर आप 5 स्पेलिंग लिख दें, मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी ठीक है। तो ये चीज जो है ना, हमारी असेसमेंट ठीक नहीं है। पढ़े जहां से मर्जी पढ़े, स्टूडेंट करें ना, बेशक यूज करें, एआई यूज करें, क्या फर्क पड़ता है। बिल्कुल ठीक है जी। I think we should conclude today's session more than 1.5 hours. Over to you, Professor Salma Kundi, to conclude today's session. Kashif Zaid sahab, would you like to say something? Ayub sahab, can you say something? नहीं सर, बहुत अच्छा लेक्चर था। और एआई का इस्तेमाल आज मैंने सीखा कि हम अपने पढ़ाई में, अपनी टीचिंग में एआई को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जज़ाक वेरी गुड एफर्ट, वेरी वेरी प्राउड। इन्होंने बात करनी है या नहीं? जी मैडम, over to you to conclude today's session. Well, it was a beautiful topic and it was a beautiful presentation. और थोड़ा सा दिमाग में ये हो जाता है कि ये हम किस दुनिया की तरफ जा रहे हैं और 20 साल बाद, 30 साल बाद क्या होगा। अल्लाह बेहतर करे, अल्लाह इंसानियत के लिए बहुत अच्छा करे। मुलाजिम साहब मुझे बताएं, आशिक साहब को नेक्स्ट हफ्ते फिर तकलीफ दें या 1-2 हफ्ते की गैप के बाद दे दें? बिल्कुल, मेरे ख्याल है 2 हफ्ते की गैप के इसको पढ़ लें। कैनवा पे करेंगे, कैनवा पे वो कैनवा पे आशिक साहब, हाँ, आर यू विलिंग? साहब आप वो 3D वाला भी पढ़ लें, मैं भी आपको मुझे देखना पड़ेगा। और आपको एक स्पेसिफिक टूल भी फिर उस पे भी ले आऊंगा। जी जी सर। प्रीत को भी इसमें शामिल Okay, करेंगे, जिंदाबाद, प्रीत इज वेरी जिंदाबाद। कॉम्पिटेंट। Thank you all for attending this beautiful webinar today. Thank you, Mulazim Saab, for taking out time. Thank you, Dr. Ashiq. It was beautiful. It was lovely. And now it is stored. And inshallah, पूरे college को दिखाएंगे। अलबत्ता मैं तो कहती हूँ IT team से कहते हैं कि AI अब पूरे college में सिखाना शुरू कर दें। क्या staff और क्या students. Allah bless you all. Have a nice weekend. और पाकिस्तान जिंदाबाद। जज़ाकल्लाह। डॉक्टर आशिक, मैं आपका फोन नंबर चाहूंगा, आपको जो है डॉक्टर सलमा को, या उनसे मैं ले लूंगा, या मुझे अभी देते हैं, क्या जैसे भी करते हैं। सर आप वो नोट कर लें सर, या मैं कमेंट बॉक्स में लिख दूं? कमेंट बॉक्स में लिख दें। अच्छा, चैट हो गई इसकी। बोल दें 0336476017 0336, और ये लिख दिया बेगो आपने 476017। ठीक है जी। इसको कभी कभी फंस जाते हैं तो आपको हमको तकलीफ दिया करेंगे। जी जी सर, क्यों नहीं सर, यू वेलकम। थैंक यू सर। थैंक यू आशिक साहब, बहुत मजा आया। जज़ाकल्लाह सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।